Good morning, students. Today I have talked to you about and describe about enema. Okay, what is enema? Enema utilizes a solution of salt water that is placed in a bag or can on one side of the tube. Okay, the other portion of tube is looped and that is directly placed in the rectum. When that solutions reach in the colon properly and slightly flex knees towards the patient chest while lying, okay, towards the stomach or towards or the side. So व्हाट इज एनिमा एनिमा रे गोटे कौन हुए ना एनिमा आम जो एनिमा पेसेंट को देता तो गोटे एनिमा क्यान यूज करें गोटे बैग यूज करें से बैग बा क्यान रे बैग बा पाउच रे से कौन हुए ना सल्ट वाटर सॉल्यूशन थाए गोटे ट्यूब निया थाए एनिमा ट्यूब जो अच्छी से एनिमा ट्यूब्र गोटे साइड रे बैग थाए आ गोटे साइड कौन कहते लुब्रिकेटेड करके जेली रे लुब्रिकेटेड करके रेक्टम रे इनसर्ट करा जाय थाए ओके जेतले सॉल्यूशनटा कॉलन रे जेतले जानिबा जे सॉल्यूशनटा कॉलन रे ठीक रे पहुँचला सेतबेले कौन हम ना पेशेंट को तो देला समय आम गोटे साइड पोजिशन दे था आ गोटे तार गोटे लेग तार कौन हुए ना चेस्ट बा स्टोमक आड़ को थाए नीटा स्टोमक आड़ को थाए आ गोटे लेग पूरा पूरा सीधा होइके थाए बा पैरेलल होइके रही थाए ओके मैटर बेड बा मैट्रेस ऊपर सो लैटरल पोजिशन साधारणतः दे था तो गोटे लेग कौन हम ना तार जो नीटा को चेस्ट आड़ को एब्डोमेन आड़ को स्टोमक आड़ को ताको रखिबा आ गोटे लेग पूरा स्ट्रेट होइके रहिबो ओके सो एनिमा इज द इंजेक्शन ऑफ द सॉल्यूशंस इन द लोअर बाउल फॉर वॉशिंग ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द एब्डोमेन और वॉशिंग ऑफ द टोटल colon and evacuating the content ओके सो एनिमा में देता जहाँ सब कंटेंट गुड़ाक स्टूल गुड़ा सब हार्डनेस होकर रही थाए से स्टूल को बाहर करने आम एनिमा दे था वाशिंग करे थाए से टोटाल वाश करके सब स्टूल गुड़ाक जो हार्डनेस स्टूल थाए एनिमा जो सॉल्यूशन ताको देला पर कौन हुए ना से स्टूलटा हार्ड रू स्मूथ हो जाए लूज स्टूल हो जाए कारण वाटर विल बी मिक्सड देन द स्टूल बिकम वेरी सॉफ्ट देन इट विल बी इजिली पास आउट इट इज ऑल्सो एनिमा आल्सो डिफाइंड एज इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन into large intestine for the evacuation of the feces and cleansing the bowel ताले बाउल को क्लीन करने एवं फिशेस बा फिकल मैटर बा जोटा अच्छे स्टूल से गुड़ाक लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव करने आम साधारणतः सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन एंटर कर एनिमा कह जाए एनिमा हूँ गोटे सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन आम लार्ज इंटेस्टाइन बा बाउल छाड़ा द्वारा कौन हुए से सॉल्यूशन छाड़ा द्वारा से हार्डनेस टूलटा सॉफ्टनेस हो जाए और से ताहा बाहर को बाहरी जा आसे एवं बाउल को वाश करिबारे कॉलन को बाउल को क्लीन करिबारे कॉलन जहाँ फिकल मैटर अच्छी बा लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ फिकल मैटर अच्छी ताको बाहर करिबारे सहायता करे ताको एनिमा कहि थाउ Next come to the what are the purposes of to giving the enema. When enema as is a solution, it is inserted to the rectum. That it relieve the constipation because hardness stool becomes softness that will be easily pass, or that it relieve the fecal impulsion. In the fecal impulsion, what of the hardness stools remains in the colon or rectum that will be comes out, or that will be expelled outside or evacuated to outside through by the anus. During the surgical procedure or any delivery at the time, if there has a presence of any fecal matter, that presence of hardness stool, that will be removed
by the anus by the giving the by the giving the enema ताले सर्जिकल प्रोसीजर डिलीवरी समय जो फिकल मैटर थाए सेगुड़ा मत बाहर करिबार एनिमा सहायता करे एंड इट विल मेंटेन द रेगुलर बाउल फंक्शंस एंड इफ द पेशेंट हैज अंडरगॉन एनी बाउल सर्जरी बिफोर इट if we will observe that patient is on the has the constipation stage, so we do the preoperative preparation that type patient. And if there is any problem in the intestinal tract, that will be visualized for that visualized or for washing of the total content of the from the intestinal tract, then we will visualized तो इंटरस्टार्ट जहाँ प्रॉब्लम अच्छी ताको विजुअलाइज करने हेल्ले आगे फास्ट से जहाँ थी कंटेंट ताको बाहर को बाहर करा जाए तो टू प्रमोट द विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरस्टार्ट सो फॉर द रीजन्स वी इंसर्ट द इंट्रोड्यूस द एनिमा फॉर रेडियोग्राफिक इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन फॉर दैट पर्पज टू प्रमोट विजुअलाइजेशन वी इंट्रोड्यूस द एनिमा टू द पेशेंट and further to clean the large intestine for the reasons also enema is given. Then classification of enema that is divided into two types, that is evacuate enema, retained enema. Evacuate enema further divided into the simple evacuate enema, medicated cold ice evacuate enema. Medicated cold ice evacuate enema is also further divided to the oil enema, purgative enema, astringent enema, anthelitic enema, carminative enema. And retained enema is also divided into stimulant enema, nutrient enema, emollient enema, sedative enema, anesthetic enema. Okay, so first they see that simple in the from the evacuate enema it divided into the simple evacuate enema or medicated cold ice evacuate enema. So what is simple evacuate enema? Simple evacuate enema helps to stimulate the defecation to passes the stool to treat the constipation of the patient, the patient who cannot passes the stool because and feels the pain because the stool is very hard and it remains in the colon or bowel. If the patient has any gastric problem or gases distension in the abdomen, for that relieve the gases from the abdomen, the simple evacuate enema is very better helpful to the patient. ताले simple evacuate enema कौन हुए ना पेशेंट डेफिकेशन स्टेज रे थाए किंबा कॉन्स्टिपेशन स्टेज थाए कॉन्स्टिपेशन स्टेज रे थिले कौन हुए ना पेशेंट लेस फ्रिक्वेंट बाल मूवमेंट होता है, पेशेंट स्टूल हार्डनेस होता है, पेशेंट पेन फिल करे ताकू ट्रीट करने कि पासेज स्टूल करने डेफिकेशन पासेज स्टूल करने तो सिंपल एवाक्यूएंट एनिमा पेशेंट को दि जाए कि पेशेंट यदि गैसेस प्रोब्लेम थाए अत्यधिक गैस आकुमुलेसन होता है ताकू रिलीव करने सिंपल एवाक्यूएंट एनिमा दि जाए. व्हाट आर द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द सिंपल एवाक्यूएंट एनिमा लाइक सोप एंड वाटर. ओके, सोप आउ वाटर सॉल्यूशन सोप सहित वाटर सॉल्यूशन करके सिंपल एवाक्यूएंट एनिमा प्रिपरेशन करा जाए और पेशेंट को दि जाए था इन इंट्रोडक्शन थ्रू बाय द रेक्टम. Here a solution is prepared in the take the 50 ml of soap jelly added with the 1 liter of water. 50 ml soap jelly रे 1 liter water को ऐड करके सोप एंड वाटर सॉल्यूशन तैयार करा जाए आगो सिंपल एवाक्यूएंट एनिमा कही था. ताले सिंपल एवाक्यूएंट एनिमा रे सोप एंड वाटर सॉल्यूशन सोप को वाटर मिसई की सॉल्यूशन तैयारी करा जाए. एथरे वी टेक द सोप जेली इज अबाउट 50 ml इट एडेड विथ द 1 liter of water. Also we take the normal saline for the preparation of the simple evacuate enema. In the normal saline we take 1 teaspoon of sodium chloride is added with the half liter of the water. हाफ लिटर वाटर रे कौन करवा ना 1 टीस्पून फुल बा 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड मिसैकी नॉर्मल सालाइन तैयारी करके नॉर्मल सालाइन ताकू ये गोटे प्रकार सॉल्यूशन ताकू मध्य हम पेशेंट को रेक्टम रे इंट्रोडक्शन करके पेशेंट कॉन्स्टिपेशन और डेफिकेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करि थाउ.
ओके कन्स्टिपेशन को ट्रिटमेंट करिथाउ एवं डेफिकेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करी स्टूल गुड़ाक हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करके बाहर कर जाए। टैप वाटर आल्सो टेकन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सिंपल एवाकुएट एनीमा। ओके देन कम टू द ऑयल एनीमा। ऑयल एनीमा आल्सो हेल्पफुल फॉर टू सॉफ्टन द फीकल मैटर इन सीवियर कन्स्टिपेशन। जदि पेशेंट को सीवियर कन्स्टिपेशन होती तार फीकल मैटर को सॉफ्टनेस कराया ऑयल एनीमा दे था। व्हाट आर सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द ऑयल एनीमा? सॉल्यूशन लाइक द ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, जिंजर ऑयल, that type of oils are used for the preparation of the solution in case of the oil enema. It is also used for the soften the fecal matter if the patient has the in constipation or defecation stage, that or fecal impactation. जदि पेशेंट को कन्स्टिपेशन हो फिकाल एम्पाकेशन रही तो से कौन हुए ना ऑयल एनीमा देकी आम स्टूल को फिकाल मैटर को सॉफ्टन करि थाउ। एथरे ऑयल एनीमा रे कौन सॉल्यूशन यूज करा जाए? ऑयल एनीमा रे आमे सॉल्यूशन यथा ऑलिव ऑयल नहीं थाउ, कैस्टर ऑयल नहीं थाउ, जिंजर ऑयल नहीं थाउ। देन कम टू द परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा आल्सो कॉज बाउल टू कंट्रास्ट एक्टिवली एंड एवाकुएट कंटेंट। परगेटिव एनीमा दबा द्वारा कौन है ना बाउल जो कंट्राक्शनटा ठीक रे हुए एवं बाउलर कंटेंट गुड़ाक बाहर को बाहरी जाए। इधर सॉल्यूशन कौन यूज करे थाए? सॉल्यूशन लाइक द प्योर ग्लिसरीन अबाउट 15 to 30 ml। ग्लिसरीन एंड वाटर इज अबाउट टू द 1:2। ये टेक द 1:2 अनुपात ग्लिसरीन एंड वाटर नवा। जदि 2 भाग वाटर अंश है से 1 भाग ग्लिसरीन थी एंड ग्लिसरीन कैस्टर ऑयल 1:1 नवा। जदि ग्लिसरीन भाग 1 थाए कैस्टर ऑयल 1 भाग नवा। मैग्नेशियम सल्फेट जदि सॉल्यूशन नवा ताले 60 to 120 ml विल बी एड विथ द सफिशिएंट वाटर। ताले परगेटिव एनीमा मध्ये कौन हुए ना परगेटिव एनीमा दबार कज है जे परगेटिव एनीमा देले कौन है परगेटिव एनीमा दैट कजेस द बाउल contraction properly and evacuate its content. What are the solution used in the purgative enema? Solution like the you also use the pure glycerin that is about 50 to 30 ml will take as purgative enema to treat the patient constipation. Also take the solutions like the glycerin and water is about 1:2. Also taken the glycerin and castor oil is about 1:1. Also taken the magnesium and sulfate as like the solution, that is magnesium sulfate will take the about 60 to 120 ml with adding the sufficient water. magnesium sulfate नेला समय कौन करबे ना 60 to 120 ml magnesium sulfate नहीं ताको sufficient amount water रे ऐड करके magnesium sulfate को ऐड करके water रे हमें purgative enema मध्य प्रिपरेशन करि थाउ। ओके नेक्स्ट कम टू द carminative enema। carminative enema also relieve the gastric distension। जदि abdominal gases रोची ताको distension रोची ताको relieve करिया पई आमे carminative enema देई थाउ। it causes the peristalsis movement of the stomach or bowel muscle। जो स्टोमक और बाउल जो मिकोस जो रही से मसल रही पेरिस्टालिस मूवमेंट करे जहाँ कंटेंट गुड़ाक कंटेंट्स will be easily goes to outside through the by the anus. It is treated as same like the simple evacuate enema। simple evacuate enema रे जेमिति दिया जाउछि आकु मते carminative enema सेही टाइप रो दिया जाए एता काम भी सेही टाइप रो। ओके इट इज also useful to relieve the gases distension from abdomen and it causes the peristalsis movement in the stomach or bowel। What type of solution are used for the preparation of the carminative enema? Solution like the turpentine, that is about 8 to 60 ml of turpentine will be taken and it is used as a solutions such as the which is known as the carminative enema। So turpentine 8 to 16 ml नहीं जिबा सेथरे 600 ରୁ 1200 सोप सॉल्ट सोप सॉल्यूशन नहीं जिबा तो 600 ରୁ जो 1200 सोप सॉल्यूशन नेले सेथरो 8 ରୁ 16 ml टर्पेंटाइन मिसई दबा मिसई देला पर सॉल्यूशन जो तैयार होला ताको हमें कार्मिनेटिव एनीमा सॉल्यूशन कार्मिनेटिव एनीमा कहि थाउ से सॉल्यूशन को ताले कार्मिनेटिव एनीमा रे जो सॉल्यूशन यूज करे थाए से सॉल्यूशन होची टर्पेंटाइन 8 ରୁ 16 ml नहीं कि 600 ରୁ 1200 ml सोप सॉल्ट सॉल्यूशन रे मिसई दबा मिसई के हमें टर्पेंटाइन सॉल्यूशन यूज करिबा। ओके ताको आम कार्मिनेटिव एनीमा कहि थाउ बा मिल्क मोलासेस मध्य नबा 90 ରୁ 230 ml नहीं जिबा मोलासेस
it mixed with the warm milk. We'll take the 9 to 230 ml of molasses and it will be added with the warm milk. Then that solution will be prepared and it is used as the carminative enema. Then come to the anthelimatic enema. Anthelimatic enema will be help for the to destroy and expel the worm from the intestine जो worm रही ताको expel बाहर को बाहर करने पाई बा destroy करने पाई anthelimatic enema use करे थे. Solutions are used in the anthelimatic enema like the infusion and quassia. 15 grams of chips नहीं कि थे 600 ml water 15 ग्राम क्वासिया नहीं कि से कौन करवा 600 ml वाटर ऐड करदेवा. ओके. ऑल्सो टेक द हाइपोटोनिक सैलाइन सॉल्यूशन लाइक द सोडियम 60 ml सोडियम क्लोराइड रे 600 ml वाटर मिसई दबा मिसई जो सॉल्यूशन तैयारी से सॉल्यूशन को आम कौन करवा एनीमा आकार यूज करा से एनीमा को कहते एंथेलेमेटिक एनीमा. आस्ट्रिंजेंट एनीमा ऑल्सो it will help for the contrast of the tissue and the and blood vessels. It will check the bleeding, inflammation, lesion, the amount of mucus discharge etc. तो आस्ट्रिजेंट एनीमा दबा द्वारा आम कौन करवा ना ब्लड वेसल टिश्यू को भल भाव में विषय जापर ए ब्लीडिंग इनफ्लामेशन को चेक करें एवं मिकस डिस्चार्ज तार अमाउंट केते रहिला बा लीजन कोट रही जानी हुए लीजन केते परिमाण लीजन कौन डिस्चार्ज होउची कि मिकस डिस्चार्ज केते होउची ता जानी हुए. एतरे सॉल्यूशन कौन यूज करा जाए ना टैनिक एसिड सॉल्यूशन यूज्ड about we added in tannic acid. We take 2 grams of tannic acid and is added with the 600 ml of water. Then solution is prepared and is treated to the constipation patient and the solution used in the used as enema known as astringent enema. The solutions is prepared in the astringent enema that will be helpful to treat the constipation patient. Next come to the cold enema. Cold enema is given to decrease the body temperature or hyperthermia case or heat stroke case. Okay, and it is also used as the colonic irrigations. Okay, then come to the retention enema. In the retention enema, first is the stimulant enema. Okay, it stimulant enema is treated to the shock and collapse patient, and solutions are used like the black coffee. So 1 tablet of spoon coffee powder will taken and is added with 300 ml of water. Then solution is prepared and it is treated to the treatment of shock and collapse patient. Next come to the sedative enema. Sedative enema also be helpful for the to induce sleep. Drugs used like the paraldehyde and chloral hydrate. That type of drugs used in case of the sedative enema and it is also useful the induce sleep. Then come the anesthetic enema. Anesthetic enema produce anesthesia in gland. Drugs like avertin used. It is about 150 to 300 milligram per kg of body weight will be taken and it will be given to the patient. Then it create the anesthesia to the gland. If the patient feel pain, that will be also reduced. Next come the emollient enema. In the emollient enema, bland solutions introduced in the rectum for the checking of the diarrhea or relieving irritation on the inflammatory mucus. ताले emollient enema में कहीं देता हूँ इतने emollient enema रे bland solutions कौन करे rectum रे introduction करी था कहीं ना bland solution rectum introduction कले हमें diarrhea को चेकअप करी परिबा जदि mucus रे किसी inflammation है चिपा irritation है चिता को मध्य relieve करी परिबा. The solutions are used like the starch and opium. Here we take 1 to 2 ml of opium is added with the 120 to 180 ml of starch, mucilage or rice water. So is added the 1 to 2 ml of opium is added with the 120 to 80 ml of rice water. Then solution is prepared and it is used as the emollient enema. It is helpful for the checking of the diarrhea, relieving the irritation or inflamed mucus. Then come to the nutrient enema.
In the nutrient enema, it is supply food and fluid to the body. Solutions are like the normal saline, glucose 2 to 5% used as the nutrient enema. And here we take the glucose normal. We will take the solution like the normal saline for purpose of the nutrient enema. It is also provide the food and fluids in the body. And another solutions like the prepared 2 to 5, take the 2 to 5% of glucose, okay, and we will take the also take the peptonized milk, okay, 20 ml per milk is added, then nutrient enema is prepared. We give 1100 to 1070 ml in 24 hours or 180 to 270 ml at 4 hours interval. आम आमाउंट सॉल्यूशन केते दबा तो जानले जे नॉर्मल न्यूट्रिएंट नॉर्मल सैलाइन यूज करथे ग्लूकोज 2 to 5% मध्ये यूज कर परिबा बा पेप्टोनाइज्ड मिल्क नै कि सॉल्यूशन प्रिपेयर करा जाय थाए एवं एथरे केते सॉल्यूशन अमाउंट रो दिया जाय थाए ना 1100 ରୁ 1700 ml 24 आवर मध्ये दिया जाय किंबा 180 ରୁ 270 ml प्रति 4 घंटा रे इंटरवल ले देई थाउ ओके then come to the solution used. Various type of solutions already I have told to you. The another solutions like the hypertonic solutions taken. Hypertonic solution like the sodium phosphate, it is used as treated as the enema. The hypertonic solutions that contains more dissolved particles. Here it contains the more dissolved particles, so it is more solute, okay. Solutions contains more solute, okay. Hypertonic solutions are taken like the hypertonic solution like the tap water will taken here having the lower concentration of the solutions, okay. Then come taken the isotonic solutions, example like the physiological saline. Here we take the 1 teaspoon tablet of salt, it added with the 500 ml of tap water. Isotonic solution also has the same salt concentration as for cell and blood, okay. Others solution like the 3 to 5 ml of concentrated soap solution will taken, it added with the 100 ml of water, okay. Then come to the contraindications. After giving the solutions which is used as enema to treat the constipations for the regular bowel movement and for the defecation purpose, some contraindication also be seen. Patients undergo the acute renal failure, okay. In the acute renal failure, what happen? In the acute renal failure, the patient, okay, the patient what will be in the patient what will be feel, the patient feels pain, discomfort, okay. In the acute renal failure, patient feel discomfort, patient also feel pain, and patient in patient the kidney here in main part is the role of the kidney. Here kidney suddenly cannot filter waste from the blood. ब्लड रू जो किडनी फंक्शन थाए जो वेस्ट को फिल्टर करिवो सेटा किडनी फंक्शन वेस्ट फिल्ट्रेशन करिवो ब्लड जो वेस्ट फिल्ट्रेशन करिकी बाहर कर दे से वेस्ट फिल्ट्रेशन करि पारे नाही तेन पेशेंट एथरे एक्यूट रेनल सेटा को एक्यूट रेनल फेल कहि थाउ सो इन द एक्यूट रेनल फेलियर किडनी सडनली कैन नॉट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड ओके एंड appendicitis here vermiform appendix of the person the vermiform appendix becomes inflamed infections and mucus will be or pus will be accumulated so vermiform appendix रे कोन होय ना pus deposit हो जाए सेतर pus बाहरे एवं सेटा inflamed हो जाए सेठी infection हो जाए ओके एवं पेशेंट पेन फील करे intestinal obstructions also be appear and abdomen becomes inflamed and infected
and patient undergoes the hypothermia, the temperature will be reduced automatically. Fluid electrolyte imbalance occurs. There is balance is not maintained properly. Okay, and antibiotic hemorrhage will be appear. Okay, before pregnancy, sorry, before delivery also be bleeding will occurs. And patient undergoes the surgery in the lower intestinal tract for that purpose. After admission, after introducing the enema, patient undergoes the surgery in the lower intestinal tract because any problems occurs in the lower intestinal tract. Then they come to the general instructions. Here review the physician's order, and amount of solution will be considered, will be taken. In case of infant, will be introduced 150 to 250 ml of solutions. If the patient is a toddler, will be the nurse will be administered to 50 to 350 ml of solutions in the rectum. For school going child, nurse will take in 300 to 500 ml of solutions. In the adolescent, the nurse will take the 500 to 700 ml of solutions. In case of adult, the nurse take the 750 to 1000 ml for enema purpose. The temperature of solutions in case of adult is about 105 to 110 Fahrenheit or 40 to 43 degree Celsius. In case of child, the temperature of solution should be 100 degree Fahrenheit to or 37.1 degree Celsius. What are the procedures? First come to the preliminary assessment. Okay, check the first assess the patient conditions. Okay, check the diagnosis, in which time surgery will be occurred in the patient. So date and time also be checked. What type of diagnosis also be checked. Okay, and patient having any bowel problems like the constipations, diarrhea, defecations, abdominal pain, any abdominal cramp, any disorder, that will be assessed. Okay, patient if the patient has a loss of appetite, any abdominal fullness, that will also be assessed if the client complaint. Also we know about that client control their external clients has ability to control their external sphincter or not. Assess history like the any previous enema will be received by the patient or not, any irritations or injury having to the patient side, it is also present not, that will be also be assessed. Assess physician's order regarding the giving enema. तो एथरे कौन हम कौन सब प्रिलिमिनेशन थाए ना आमर डायग्नोसिस डेट टाइम सर्जरी के होता ताकू देखा पेसेंट किसी abdominal पेन रोचे कि क्राम्प रोचे कि सर्जरी होती कि डेफिकेट स्टेज अच्छी देखा जाए था पेसेंट abdomen फुल अच्छी कि नहीं, पेसेंट भोक लगुच कि नहीं, पेसेंट एक्सटर्नल स्पिंचर उपर कंट्रोल अच्छी कि नहीं, कारण वॉलंटरी कंट्रोल रे स्टूल पास हो जाए तो सेटा अच्छी कि नहीं देख ताकू आसेस करा जाए जानवा को पड़ी थाए. किसी एनिमा सहित प्रिवियस जो एनिमा नहीं थिला तो से किसी एनिमा अटैच इरिटेशन इंजुरी थिला कि नहीं एवं एनिमा दवाई फिजिशियन ऑर्डर देछन ताको देखिबा उचित. देन कम टू द आर्टिकल, देन कम द प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल. व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल शुड बी टेकन, व्हाट टाइप ऑफ कॉजेस देयर. We take the screen stand because it maintain privacy, because giving enema it is patient feel shameless for to avoid the shame to keep the screen stand in the bedside to provide maintaining the privacy. ताले स्क्रीन स्टैंड कौन पे दिया जाए ना पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन करने, पेशेंट को लाज लगे, पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करे, तेणु कंफर्ट आम स्क्रीन स्टैंड देले से ठीक भाव में से तार प्रोसीजर को कोऑपरेट करिवो. We take tray that contain enema can, tubing with clamp, rectal tube. We will take rectal tube in case of adult, that is about 22 to 30 French, or children 12 to 18 French.
आम रेटाल ट्यूब नहीं था एनिमा क्यान नहीं था एनिमा क्यान कौन हुए बा एनिमा ब्याग कही था से एनिमा ब्याग्रे सल्यूशन थाए एनिमा ब्याग सहित गोटे ट्यूब आटाच हुए ताको रेटाल ट्यूब कही था से रेटाल ट्यूब आडल्ट मान 22 to 30 फ्रेंच थाए चिल्ड्रेन केस 12 to 18 फ्रेंच थाए ताले गोटे पट ट्यूब्र गोटे साइड कौन है ना ब्याग्रे आटाच है आउ गोटे साइड कौन हम पेसेंटर आनस आनस आटाच रेटम इनसर्ट करा जेली अप्लाई करके सेटा को इनसर्ट करा जाय थाए गले कौन हम ना ब्याग्रे जो सल्यूशन गुड़ा थी ता मध्य कौन हुए सल्यूशन गुड़ाक धीरे धीरे रेटम को इंट्रोड्यूस्ड इनसर्ट होता है। We take the enema can that contain the solution. We take the tubing and with clamp. Tubing clamped. It will prepare and store enema solution for attachment. Okay. Tubing clamp कहीं ना से attachment पाई enema can से attachment दिया था और enema can रे will contain the solutions. Retal tube also take retal tube that taken or in the prepared in the article arrangement. It is helpful for the installation of enema solution rectum retal tube टा कहीं ना जने rectum रे solution entry करने पाएं बा installation करने पाएं सहायता करें enema solutions we take आज डिजाइड पड़े एनिमा को टाइप रो पेशेंट को टाइप एनिमा दरकार करूची से अनुसार आम एनिमा सल्यूशन नि जाय थाए ए लोशन विथ थर्मोमीटर नि जाय थाए इट इज हेल्पफुल टू चेक द टेम्परेचर ऑफ एनिमा सल्यूशन विल टेक द लुब्रिकेंट जेली इट इज हेल्पफुल फॉर द लुब्रिकेट टिप फॉर इजी इंसर्शन 1 ounce glass of 1 ounce glass also taken it measure the solution a Macintosh with the towel also bring it protect the bed a covering set will taken it will maintain the privacy and disposable gloves helpful for the reduce the transmission of infection intravenous stand IV stand taken for hanging the enema and appropriate height ताले आम आर्टिकल्स कौन है आ तार प्रपोज बा कजेसटा कौन आम गोटे स्क्रीन स्टैंड साधारणतः नहीं था कहीं प्राइवेसी मेंटेन पेशेंट को लाजर लगे तो टू प्रिवेंट द सेमलेस एंड प्रिवेंट द ओवरक्राउडिंग इन द यूनिट एरिया एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द कंफर्ट टू द पेशेंट को कंफर्ट करने पेशेंट को लाज न लगे जहाँ प्रोसीजर कोऑपरेट करने आम स्क्रीन स्टैंड नहीं था तापर ट्रे नवा से ट्रे फास्ट गोटे एनिमा कैन बा एनिमा बैग नहीं था से एनिमा सल्यूशन थाए अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर फिजिशियन जो फिजिशियन जो प्रकार सल्यूशन बा जोटा एनिमा कही था से टाइप पेशेंट कंडीशन अनुसार जहाँ भी लिखाई था फिजिशियन ऑर्डर रे डॉक्टर कही था से टाइप सल्यूशन नि जाए तापर गोटे ट्यूबिंग विथ क्लाम्प नि जाए से ट्यूबिंग क्लाम्पटा कहीं कौन पे ना अटैचमेंट से बैग सहित अटैच ट्यूबिंग विथ क्लाम्प नि जाए रेगुलेशन ऑफ सल्यूशन क्लाम्प्स हेल्प करे रेटल ट्यूब नि जाए रेटल ट्यूब ऑल्सो भी अटैच टू द एनिमा कैन रेटल ट्यूब दी प्रकार साइज अच्छी गोटे आडल्ट 20 to 30 फ्रेंच अच्छी चिल्ड्रेन 12 to 18 फ्रेंच रही रेटल ट्यूब कौन करा हुए ना एनिमा सल्यूशन को इजिली इंस्टॉलेशन रेटम करने हेल्प करे एनिमा सल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द डिजाइन पट एनिमा गोटे ए लोशन विथ थर्मोमीटर विल टेकन that will measure the temperature lubricant jelly also be help for the easy insertion lubricant jelly कौन करा हुए ट्यूब रेड ट्यूब गोटे पार्श्व ताको अप्लाई करके इंसर्शन करा जाए 1 ounce glass also taken measure solution Macintosh with towel taken Macintosh towel कौन करिवो ना पेशेंट रो तळे जो एनिमा जो साइड दिया से तळे कौन है Macintosh towel दिया जाए कहीं बेड को प्रोटेक्ट करे एवं कहीं बेड्रे से जदि आधार हो जाती लगी जाती से लिनेन को खराब कर दिखाते बेड को खराब हो जाए ए कवरिंग सोल टेकन कारण ये पेशेंट को कभर करा जाए तार जो ड्रेस ड्रेस जहाँ पिंधो कढ़ाला गोटे कवरिंग सीट दि जाए यहाँ ओनली एक्सपोज पार्ट द प्रोसीजर डन इन ओनली इन द एक्सपोज पार्ट अदर पार्ट विल बी कवर्ड कल जो पार्ट रे प्रोसीजर कराऊँच रेटम पार्ट रे कराऊँच तो रेटम पार्ट रे एक्सपोज हम अदर पार्ट गुड़ा कवरिंग करा जाए डिस्पोजेबल ग्लोव्स टेकन टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन इन्फेक्शन कारण डिस्पोजेबल ग्लोव्स न जब लगेगा ताले हम ट्रांसमिशन इन्फेक्शन हम तेणु डिस्पोजेबल ग्लोव्स पिंधा कहीं इन्फेक्शन को रिड्यूस करवा तापर सब प्रोसीजर सरला से आम फोपाड़ीदे आमर डस्टबिन रे बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन रे रखा आई बी स्टैंड टेकन बिकज हियर एनिमा कैन विल बी हैंग्ड जो एनिमा कैन को एनिमा कैन ना सल्यूशन रेटल ट्यूब माध्यम रेटल ट्यूब मध्य रेटम द्वारा
କ'ଣ ହେବ ନା କଲନ୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଥାଏ। ଆଇଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଆନସ୍ରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଆନସ୍ଠାରୁ କିଛି ହାଇଟ୍ରେ ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରପର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଫ୍ଲୋ ହୋଇ ରେକ୍ଟମ୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍। First, before procedure, everything procedure. First, wash your hand to prevent the infection or maintain the medical auspices. Okay. Before doing the procedure, first identify patient and explain the procedure detail patient because it win the confidence of patient. प्रोसीजर पूर्व पेसेंट को टोटाल एक्सप्लेन करवा कौ टाइप प्रोसीजर कर कहीं पेसेंटर कॉन्फिडेंस को विन बा जितिया कहीं कॉन्फिडेंस तार जदि ठीक रहा ताले से बहुत कोऑपरेट करें। ओके, एंड प्लेस द मैकिंटोश व्हिच वर टेकन दैट विल बी प्लेस अंडर द पेसेंट हिप। पेसेंट हिप तले आम मैकिंटोश रखा। ओके, एंड गिव द पोजिशन द पेसेंट लाइक द लेफ्ट लैटरल पोजिशन विथ राइट नी फिक्सड। मुझे जे पेसेंट को गोटे लैटरल पोजिशन दिज्व तो तार गोटे साइड गोटे राइट गोटे लेग गोटे नी टाक फ्लेक्स करके चेस्ट आड़ को एब्डोमेन आड़ को रखा जाए। तो एथरे पोजिशन कौ दब ना लेफ्ट लैटरल पोजिशन दि जाए जार राइट नीटा फ्लेक्स करा जाए एवं सेटा को राइट नीटा फ्लेक्स करके एब्डोमेन आड़ को रखा जाए कहीं विल क्लियर विजुअलाइज द रेक्टम एंड इजिली इंसर्ट द रेक्टल टिप फॉर द इंट्रोड्यूसिंग द सॉल्यूशंस। तो एथर कौन हुए ना आम पेसेंट को लेफ्ट लैटरल पोजिशन दे था और राइट नी फ्लेक्स करके एब्डोमेन आड़ को रखा जाए जहाँफल कि रेक्टल ट्यूबटा ठीक भाव इंसर्ट करी हुए विजुअलाइज हुए और सॉल्यूशन ठीक भाव में रेक्टम मध्यम रेक्टम कॉलन एरिया आड़ को जाए इजिली कौन हुए ना स्टूल गुड़ाक सब हार्ड स्मूथ हो जाती। The exposing part of the rectum only expose part only the procedure area where is procedure done that body area will be exposed and other parts will be covered. So cover the patient with a sheet exposing the rectum. Here make patient feel relieved and very comfortable. After completing a procedure, that part will be also be covered. And here patient feel very relieved and comfortable because it is very privacy area where patient feel discomfort and patient has seamless, so that prevent seamless and providing comfort. So that area after procedure that will be covered. In that position place the bedpan or a commode फर्दर टू मीट द एलिमेंटरी नीड ऑफ पेसेंट जदि किसी पेसेंट स्टूल करने चाहूँगी कि इम्यूनेशन करने चाहूँगी तो बेड पान दबा। ओके, एंड देन टुगेदर ऑल द आर्टिकल्स लाइक द एनिमा कैन ट्यूबिंग क्लैंप एंड रेक्टल टिप ऑल द आर्टिकल्स विल बी अरेंज्ड फॉर टू फॉरवर्डिंग द नर्सिंग प्रोसीजर। सब आर्टिकल गुड़ाक जहाँ एनिमा दरकार सब गुड़ाक आम एकाठी रखा कहीं नर्सिंग प्रोसीजर को फॉरवर्ड करने नर्सिंग टू आग्रेट द नर्सिंग प्रोसीजर को आगे आम सब आर्टिकल गुड़ाक गोटाठी रखा। देन चेक देन ऑल द articles whatever required that will be gathered and solution also be prepared and we will check the solutions. Okay, and that solutions then check the temperature. It is when after checking the temperature solution of temperature, then will be put the solution into the enema can, because if we take the hot solution that will be give complication to the patient. जब आम टेम्परेचर नापिकी जी टेम्परेचर रहा से टेम्परेचर आम कौन करवा एनिमा कैन से सॉल्यूशन को ढालिबा तापर दबा ताले पेशेंट जो कॉम्प्लिकेशन थी हॉट कॉम्प्लिकेशन रहिबो नहीं। ओके, and then the enema can will be hanged from above of the anus at the ranges is about 30 to 45 cm above anus. Okay, तापर कौन करवा एनिमा कैन को पेशेंट आनस ठारू 30 to 45 cm डिस्टेंस रे कौन करवा सालाइन स्टैंड रे एनिमा कैन को हैंग करवा। ओके, फॉर इजिली अलाउ फ्लो ऑफ द सॉल्यूशंस।
देन वाश हैंड वेयर ग्लोव्स तापर हाथ धोईदबा ग्लोव्स पिंधिबा देन टेक द देन द डेटल ट्यूब ऑलरेडी अटैच टू द एनिमा कैन दैट lubric the on enema can the other sides will be lubricate and inserted in the rectum. For that reasons we separate the buttock area, insert the location of the anus, then insert the rectal tube. देन ऑल्सो भी इंस्ट्रक्ट द पेसेंट टू टेक द डीप ब्रीथ तापर कौन करवा रेटल ट्यूब्र गोटे साइड तो एनिमा कैन सहित आटाच होती आ गोटे साइड कौन करवा लुब्रिकेट करके लुब्रिकेट करदेवा और भल भाव बट को सेपरेट करके आनस को विजुअलाइज करके रेटम कौन करवा रेटल ट्यूबटा को इंसर्ट करवा और पेसेंट कहवा टे डीप ब्रीथ निए कहीं डीप ब्रीथ ऑल्सो प्रमोट द रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्पिंचर देन यू टू बी अलाउ टू द इंसर्ट ऑफ द रेटल ट्यूब जो एक्सटर्नल स्पिंचर रिलैक्सेशन है ताले सेटा ओपन होगला और रेटल ट्यूबटा भल भाव एंट्री हो जाए. देन नेक्स्ट स्टेप 13 होल्ड ट्यूबिंग इन रेटम्स कन्स्टांटली अंटिल एंड फ्लूइड इंस्टॉलेशन है पर्यंत आम रेटल ट्यूबटा भल धरी नवा. ओके ओपन द रेगुलर क्लैंप टू एक्सपेल एयर एंड आलो सॉल्यूशन एंटर स्लोली तापर कौन करवा जो क्लैंपटा थी ट्यूब विथ क्लैंप थाए से क्लैंपटा को रेगुलेट करके एयर गुड़ाक बाहर कर नवा और सॉल्यूशन को धीरे धीरे स्लोली एंटर करवा स्लोली छाड़वा. ओके सो हियर थ्रू बाय द क्लैंप रेगुलेट द सॉल्यूशंस and will be observed the solution will be easily flow through by the tube through by the rectal tube to the rectum. Explain that feeling of distension is normal. The distension patient को कहबा जे तार जो फिलिंग्सटा किभଳି रोचे नॉर्मल रोचे रेटम द्वारा रेटम रे इंसर्ट परे ता फिलिंग्सटा नॉर्मल रोचे कि एबनॉर्मल रोचे देखा कहीं जदि इनसर्ट कला समय किसी इंजुरी होता है पेसेंट को डिस्कम्फर्ट फिल हुए से पचार एडवाइज द पेसेंट टू रिटेन द सॉल्यूशन फॉर 15-20 मिनट्स 15-20 मिनट पर्यंत से सॉल्यूशन को जीवाई से सॉल्यूशन से रिसीव करने रेटम द्वारा जीवाई पेसेंट को कहवा जे सॉल्यूशनटा 20 मिनट्स पर्यंत आपको जीव बॉडी भितर को थ्रू द रेटम द्वारा तेणु से constant keep patience. Okay then replace the enema can and tubing proper received after through washing जब सरला ठीक टाइप एनिमा कैन ट्यूब जहाँ करके धोई भले रखा. रेज द क्लांट हेड अबाउट 30 डिग्री क्लांट हेड को 30 डिग्री को रेज करवा. तापरे आज द पेसेंट टू रेज द हिप बाय बेंडिंग नी एंड लिफ्टिंग द हिप अपवर्ड्स तार पेसेंट को कहबा जे नी बेंड करिवो हिप को रेज करिवो नी को बेंड करिवो आउ हिप को अपवर्ड करिवो फॉर प्रोवाइडिंग द बेड पान. ओके दे सारा पर कौन करवा एनिमा कैन दे सारा पर तो पेसेंट को कहबा जे तार जो नी अच्छी नी को भल भाव फ्लेक्स कर हिप को अपवर्ड्स कले कौन हम ना कर सारा पर ता अंडर कौन करवा बेड पान दे था. हियर नर्स प्लेसेस हैंड पाम अंडर क्लांट सैक्रम क्लांट सैक्रम तले कौन नर्स तार हैंड पाल्म रखिबो एंड रेस्टिंग द एल्बो ऑन मैट्रेस and using a lever to help lifting while shifting the pan under clamp जितले से बेड पान क्लांट रेटम तले रखुची तो से गोटे एथरे नर्स गोटे लिभर टाइप काम करुच्ची कहीं एपटे गोटे टाइप गोटे हाथ से कौन करुच्ची क्लांटर साक्रम को क्लांट साक्रम तले रखी. ओके आ गोटे हैंड कौन करुच्ची ना ताको लिफ्टिंग करके बेड पान ता रेटम्र टोटाल पेसेंटर रेटम पार्ट तल भाग नहीं कि रखुच्छी. ओके देन प्योर वाटर टू अलाउ द क्लांट टू क्लीन द पेरिनो असिस्टेड वाइपिंग हिमसेल्फ ड्राई तापर कौन करवा वाटर किसी वाटर पेसेंटर पेरिनम एरिया को ढाड़ी कौन कर भल भाव ड्राई करवा. ओके कहीं ये बेड पान रखा जाइए. ओके
स्टेप नंबर 22 एथरे कौन कराई ना बेड पान को कौन रखाला बेड पान तो ऑलरेडी पोजिशन रही से अलाउ क्लाएंट को क्लीन पेरिनेमा को क्लीन करागला तापर जहाँ वाटर जोटा है बेड पान कलेक्शन करागला एवं ताकू भल भाव पेसेंट से एरिया को ड्राई करागला तापर लोअर हेड ऑफ बेड फ्लैट एंड असिस्ट क्लाएंट टू रोल ऑन वन साइड फेसिंग एग्नेस्ट यू तापर कौन करवा ब्लेड बेड फ्लैट को हेड को टिके लोअर करनवा गोटे साइड को क्लाएंट को रखा आमती जो साइड को रखा तार फेसटा नॉर्थ साइड को रोथो देन प्लेस द बेड पान फार्मली अंडर द बटक तापर बेड पान को बटक एरिया रखा बटकर तले रखा देन आज क्लाएंट टू रोल बैक ऑन पान फाल्ट इन बेड तापर क्लाएंट को कहवा तू बेड पान उपर पेरिनेम एरियाटा को पेरिनेम एरिया को रखापी देन आज द क्लाएंट टू बेंड द नी टू आसिड स्क्विंटिंग पोजिशन तापर पेसेंट को स्क्विंटिंग पोजिशन रे दब रखा जमीक तार पादटा पाराला होगी रही जमीक नॉर्मल लोक स्टूल करती जो स्क्विंटिंग जो पोजिशन रे तो स्क्विंटिंग पोजिशन रे ताकू दबा लेट द पेसेंट बी एलोन व्हिल इज रिलीविंग हिमसेल्फ जो पेसेंट बेड पान रे करुच्ची स्टूल पासेज कर एकला छाड़ी दबा कहीं ये पेसेंट कंफर्ट फील करिवो एवं ठीक भाव में स्टूल पासेज हो पार द नर्स आस्क क्लाएंट टू रीच हिप और रोल ऑफ द साइड आज इन केस ऑफ इम्युलाइज्ड क्लाएंट जब क्लाएंट इम्युलाइज्ड थाए ताकले नर्स कौन कर ना क्लाएंट को कह तार नर्स क्लाएंट को इंस्ट्रक्शन दे तार हिपटा को रेज कर ता तले कौन रहा बेड पान रखा जाए देन नर्स होल्ड द पान स्टेडी नर्स कौन कर पान बेड पान को भल भाव में धरी रखी थाए ओके कहीं यहाँ क्या खसीज काले खसीज से भल भाव से धरी रखी थाए एवं आभॉइड पुलिंग सोरिंग द पान फ्रॉम अंडर द क्लाएंट स्किन रु जमी न खसी जाए से ध्यान देव कहीं खसीगले काले बाय चांस इंजुरी क्रिएट कर जाए टू प्रिवेंट इंजुरी सो आभॉइड पुलिंग और सोरिंग द पान फ्रॉम अंडर द क्लाएंट स्किन आउ थे प्रोसीजरटा मुझे आउ थे सर्टकट कहीदे तो प्रोसीजर पूर्वर बिफोर प्रोसीजर वाश योर हैंड देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट इन डिटेल देन प्लेस द मैकिंटोस अंडर द पेशेंट हिप मैकिंटोस पेशेंट हिप रखा पोजिशन गिव द लेफ्ट लैटरल पोजिशन विथ नी फ्लेक्सड टुवर्ड्स द चेस्ट लेफ्ट लैटरल पोजिशन दबा तार जो लेफ्ट लैटरल पोजिशन दबा तार राइट नीटा को फ्लेक्स करके एब्डोमेन रखा कहवा ओनली cover the exposed area where giving after complete the during the procedure cover the patient with the sheet exposing the rectum को एक्सपोज खाली रखा बाकी एरिया कभर करवा ओके एवं तब सरीगला से समय कभर करके भी से एरिया को रखिपर कैन बिकज फिलिंग ऑफ द कंफर्ट टू द पेशेंट प्लेस द बेड पान और कमंट इन द accessible position if the patient has in order to eliminate any bowel content for that reasons place bed pan command bed pan command कहीं नबा ना पेशेंट यदि एलिमिनेशन करने चाहूँ then all the articles like the enema can tubing clamp rectal tube all are together because it gives the forwarding the nursing procedure check the temperature of the solutions okay तापरे solution temperature check करिबा तापरे keep enema can or back above distance is about 30 to 45 centimeter from the anus ठारू 30 to 45 centimeter distance रे enema can को हैंग करिबा because it is helpful for the easy flow of the solution through the rectal tube then the lubricate the another rectal tube part okay one rectal tube part is attached to the enema can another part will be applied with jelly then separate the buttock insert the visualize the anus then will insert then hold the tube constantly until the fluid installation then regulate the clamp allow the air to expel and solution enter through the rectum slowly ताले कौन करबा ता टिप टाक भल भाव धरिक रखा जेपर्यंत फ्लूइड जाउछि तापरे क्लाम्प को रेगुलेट करके सेथुरु एयर को बाहर करनबा एवं फ्लूइड को स्लोली धीरे धीरे छाड़िबा देन पेशेंट कहबा किसी से डिस्कम्फर्ट फील करछि कि नहीं जदि इंजुरी होइछि ताको आउ थरे बाहर करके आउ थरे इंसर्ट करबा जदि ना होइछि छाड़ी दबा
पेसेंट को एडवाइस करवा जे रिटर्न द सॉल्यूशन इज 15 टू 20 मिनट 15-20 मिनट पर्यंत सॉल्यूशन को रिटर्न करने कहवा एडवाइस दवा वाशिंग पर तार एनिमा कैन को प्रॉपर प्लेस रे बा ट्यूबिंग प्रॉपर प्लेस रे प्रॉपर रिसेप्टर रे रखिबा देन पेशेंट हेड को द रेज द पेशेंट हेड इज अबाउट 30 डिग्री ओके इट विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रिवेंट द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ बैक हाइपर एक्सटेंशन प्रिवेंट करने ପାଇଁ पेशेंट हेड को 30 डिग्री एंगल रे रेज करवा then nurse will be instead of the patient raises their hip by bending the knee and lifting the hip upwards तार हिप टा अपवर्ड करके रखा कहवा तार नी टा बेंडिंग करिया कहवा एवं हिप टा को उठेकी नी को बेंडिंग करवा नी बेंडिंग करिवो एवं हिप टा को टिके अपवर्ड को रखिबो रखले कौन हम इट एंड इन दिस केस आल्सो कहीं करा जो ना बेड पैन को ता तले रखा पाई पेरिनम एरिया तल को रखापी बेड पैन टाक भल भाव रखापी तेणु से नी को बेंडिंग करें हिप को अपवर्ड करे तापर नर्स कौन करे साक्रम नर्स विल बी होल्ड देयर वन हैंड अंडर द साक्रम एंड अनदर हैंड विल बी रेस्ट द हिप बाय प्लेसिंग द पान अंडर द क्लांट तो नर्स गोटे हाथ कौन रहा साक्रम एरिया को रहा साक्रम तल को धरी नब आ गोटे हाथ कौन कर हिप्र तल भाग को धर कहीं से तले बेड पैन रखापी रखा जाए बिकज आफ्टर कंप्लीट द प्रोसीजर द पेशेंट विल बी टू एलिमिनेट द बाउल कंटेंट फॉर द कलेक्शंस फॉर द रीजन्स विल प्रोवाइड द बेड पैन और pan then after that pour the water to clean the area and allow the dry then lower head of the bed flat and assist client to roll on one side facing rest to तापर कौन करबा तापर तो वाटर ढाली की ताको क्लीन कले एवं ताको ड्राई करनेले करिकी तापर ये सब प्रोसीजर केवल बेड पैन है तापर बेड पैन रखापी से क्लांट पेरिनो को भल सफा कले ड्राई कले एवं तार बेड फ्लाट को जो रेज हेड होता पुणी लोअर करने देन रोल वन साइड टू द क्लांट where the his faces against you तार फेसटा नर्स विपरीत दिग को रहा एवं तार बेड फ्लाट को लोअर करागला एवं गोटे साइड को ताको रोल करागला देन प्लेस द बेड पैन अंडर द पेशेंट बटक देन आस्क क्लांट टू बेंड द नी टू आश्योर स्क्वांटिंग देन तापर कौन करबा बेड पैन देला परे ता स्क्वांटिंग पोजिशन रे रहिया पई कहबा जे नॉर्मल गोटे एडल्ट हेल्थ पर्सन मध्य स्क्वांटिंग पोजिशन रे स्टूल पास करे तो स्क्वांटिंग पोजिशन ताको देले कौन हो ना इजीली इट हेल्प फॉर द इजीली एलिमिनेशन ऑफ द बाउल कंटेंट देन लेफ्ट द एलोन बिकज जदि पेशेंट पाखे रहिबा ताले से भल भाव स्टूल एलिमिनेशन करि न थाए तेणु फॉर द रीजन्स लेट द पेशेंट एलोन then it will help to maintain privacy okay then if the patient is immobilized then we will hold the hip area and placed the bed pan under it to contain the eliminations and now here nurse hold the pan very steady and give consideration where the pan will be not be slipped because it causes the injury but to prevent the injury avoid pulling and keep the firmly the bed pan under the plant's skin then come the aftercare assist the patient in the bathroom or help position him or जेतले position दिया से आम assist करवा एवं bathroom जा समय assist करवा observe the whatever of feces will be expelled from the rectum from the colon that will be observed recorded report you done and what type of animal given that type and volume will be recorded size and type of catheter also be observed that will be recorded what type of color amount quantity of fecal return that also be recorded ask whether patient is complete not that will be also be record that will be reported and will maintain in the record
If the patient is not feel comfortable, then as to the then it will be informed to the doctors what type of discomfort will feel, and also observed any other problems. Then all the articles will be washed, and that will be replaced in their proper places. See that some articles there, here enema can, and that enema can attached with the rectal tube, and that tube has the clamp for the regulation of the fluid. Okay. Okay, over. Thank you.